بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, the fill in the blanks. So the blank number 1 is Carolus Linnaeus divided all known forms of life into two kingdoms, dash and dash. तो दो जो शुरू में kingdoms बनाए गए थे स्टूडेंट्स, that was kingdom Animalia and kingdom Plantae. So first में Animalia और second के अंदर Plantae. Bacteria were placed in the kingdom Plantae. Clear? Bacteria को शुरू में kingdom Plantae में रखा गया था because they have cell walls, and protozoa were placed in the kingdom Animalia because they move from place to place and ingest food. Clear? Now, blank number 2. The most common system of classification used today developed in 1969 by Robert Whittaker of Cornell University uses 5 kingdoms. तो उसमें 5 kingdoms कौन-कौन से थे students? You know very well. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. Blank number 3. Whittaker's 5-kingdom system of classification recognizes 2 basic types of cells, dash and dash. तो दो तरह के cells कौन से हैं students? Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Blank number 4. In 5-kingdom classification system proposed by Margulis and Schwartz, organelles of symbiotic origin such as dash and dash. तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने बेसिकली मॉडिफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने प्रपोज किया था, और इन्होंने मॉडिफिकेशन की थी 1988 में, और इन्होंने बताया था कि जो सिम्बायोटिक ओरिजिन के जो ऑर्गेनल्स दो ही थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ब्लैंक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर आल्सो कंसीडर्ड. नाउ ब्लैंक नंबर 5. A bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of students. Bacteriophage क्या होते हैं? The viruses which infect or which eat bacteria. तो उनका host कौन होगा? So that is their bacterial. Clear? The host is bacteria. So a bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of bacteria. Blank number 6. The protein coat that encloses the viral genome is called capsid. It is made up of small units which are called capsomeres. Clear? Blank number 7. Retroviruses are RNA viruses which have specific enzymes. और वो specific enzymes कौन से हैं students? Reverse transcriptases, by which they convert RNA to DNA. Blank number 8. HIV infects. तो dear students, हमने इससे previous lecture में ही infection cycle of HIV और hepatitis को discuss किया था last 2 lectures में. So HIV infects the T helper lymphocyte. Clear? T helper lymphocyte, and the defects in these cells lead to the failure in immune system. Blank number 9. Hepatitis is caused by, so it is caused by usually by the viruses. Clear? Hepatitis viruses. Blank number 10. Viral hepatitis is of dash types. So dear students, कितनी types थी? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, and hepatitis G. Clear? So viral hepatitis is of 7 types. Hepatitis A and C are caused by RNA viruses, whereas DNA virus is the causative agent of hepatitis B. Now question number 2. Each question has 5 to 6 objections. Encircle the correct answer. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे 4-5 इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें हमने जो सही है और मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको हमने एनसर्कल करना है. The first multiple choice question is, the enzymes involved in viral replication are synthesized. तो dear students, जो viral replication होती है उसके एंजाइम कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? अल्फा ऑप्शन ऑन द वायरल राइबोसोम्स. तो ये तो कोई बात नहीं, वायरस के पास कौन से राइबोसोम होते हैं? They do not have any kind of organelles. Beta option on the interior surface of viral membrane. So dear students, that is not the option. Charlie option is by the host cell. Yes, that is the answer. So the enzymes involved in viral replication are synthesized by the host cell. Now, MCQ number 2. A virion is a alpha option virus, beta option viral protein,
Charlie option is viral lysozyme and delta option is viral gene. तो जी डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आप गेस कर चुके हैं. द वारियन इज अ वायरस. एक कंप्लीट जो इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको हम वारियन कहते हैं. सो इट इज अ वायरस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3. एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग. आप अगर किसी वायरस को आइसोलेट कर लें फ्रॉम द लिविंग होस्ट तो उसको जिंदा नहीं समझा जाता. बिकॉज alpha option is separates into two parts, into two inner parts. Beta option cannot metabolize. Charlie option says rapidly loses its genome, chemically inert. Delta option is coated with an airtight shield. So this one's इसमें ना तो alpha option ठीक है, ना Charlie, ना delta. So the only we are left with beta option. तो जब उसको आइसोलेट कर लेंगे, अब वो चूंकि वो होस्ट सेल पे टोटली डिपेंडेंट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मेटाबोलाइज. सो बीटा इज द ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 3. नाउ एमसीक्यू नंबर 4. इन द लेटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जब ये लेटिक साइकिल होता है जिसमें लाइसिस तोड़-फोड़ वगैरह होती है, द होस्ट डीएनए इज, तो उसमें होस्ट डीएनए को क्या रेप्लिकेट करवाया जाता है? अल्फा ऑप्शन. बीटा ऑप्शन टर्न्ड ऑफ बाय अ प्रोटीन कोट. चार्ली ऑप्शन से डाइजेस्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. And delta option is turned on by removal of a protein coat. So the correct option is, and the answer is Charlie, that in the lytic cycle of the bacteriophage, the host DNA is digested into its nucleotides. तो ये host का जो genome होता है उसको in the lytic cycle of bacteriophage, host DNA इसको उसी के pieces में तोड़ दिया जाता है. Now, MCQ number 5, it says, in the lysogenic cycle, the DNA of a bacteriophage, alpha option joins the bacterial chromosome. Beta option says attaches to the inner surface of the host membrane. Charlie option is immediately degraded when it enters the host cell. And delta option says goes directly to the host ribosome for translation. So dear students, जैसे ही lysogenic cycle में enter होता है DNA of a bacteriophage, तो वो फौरी तौर पर जाकर उस bacterial chromosome DNA के साथ combine कर जाता है. So it joins the bacterial chromosome to become prophage. Clear? So the correct answer for this MCQ number 5 is alpha option. MCQ number 6. The temperate phage may exist as, जो temperate phase मतलब कि lysogenic में जो होता है bacteriophage, may exist as, alpha option is prophage, beta option is capsid, Charlie option is varioid, and delta option is retrovirus. So dear students, आपको पता है, आप जान चुके हैं कि temperate phage may exist as prophage. So the correct answer for MCQ number 6 is alpha. Now MCQ number 7. Phylogeny describes a species. तो phylogeny किसी भी species की किस चीज को describe करती है? Alpha option morphological similarities with other species. Beta option evolutionary history. Charlie option reproductive compatibilities with other species, and delta option is geographical distribution. So dear students, the correct answer for this MCQ number 7 is that phylogeny describes a species evolutionary history. Clear? So beta option is correct. Now MCQ number 8. In the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the first word of an organism's name, for example Homo sapiens, is its alpha option species, beta option genus, Charlie option race, and delta option family. तो dear students, आपको पता है binomial nomenclature में दो ही तो वर्ड इस्तेमाल होते हैं. The first is genus and the second is species. तो यहाँ पर first word का पूछा गया है. So the correct answer is beta option, that is genus. Now the MCQ number 9. It says, in the 5 kingdom system of classification developed by Robert Whittaker, members of the kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic, and alpha option multicellular, beta option motile, Charlie option either unicellular or multicellular, and delta option is have sexual reproduction. तो dear students, जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ना तो प्लांट्स मोटाइल हैं, मतलब बीटा ऑप्शन गया, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन किंगडम प्लांटी, सो चार्ली ऑप्शन भी गया. डेल्टा ऑप्शन हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के एतबार से भी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू देम. और जो वी द नियर मोस्ट एंड द नियर मोस्ट आंसर करेक्ट टू दिस क्वेश्चन इज alpha option, that is multicellular. Clear? So the plants are autotrophic, eukaryotic, and multicellular.
MCQ number 10, it says 5 kingdom systems of classification proposed by Margulis and Schwartz is not based on. तो जो मॉडिफाई किया था 5 kingdom classification system of Robert Whittaker को by the Schwartz and Margulis in 1988, उसमें किस चीज को कंसीडर नहीं किया गया था? नीचे जो 4 चीजें गिवन हैं वो अल्फा ऑप्शन जेनेटिक्स, बीटा ऑप्शन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चार्ली ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड एंड डेल्टा ऑप्शन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So the correct answer is Charlie, that is nucleic acids. MCQ number 11. The common name of Allium cepa, the common name of Allium cepa is, तो Allium cepa का common name क्या है? Alpha option प्याज, beta option बाथू, Charlie option अमलतास and delta option is चना. तो dear students क्या है? You know? Yes, very well. That's correct. Alpha option, that is प्याज. So Allium cepa is इसका जो common name है that is प्याज. Now there is another MCQ number 12. Arrange the following in the order of increasing group size beginning with the smallest. तो एक तरह वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की दी गई है, उसको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से ऊपर की तरफ, हाईएस्ट की तरफ, ठीक है, लार्जेस्ट की तरफ. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको पता है स्पीशीज, देन जीनस, देन देयर इज फैमिली, देन देयर इज ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम और डिवीजन एंड एट द टॉप देयर इज किंगडम. MCQ number 13, it says pigs are reservoir to. तो जो सुअर हैं ये हेपेटाइटिस में हमने पढ़ा था, ये किस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के रिजर्वायर हैं. सो द अल्फा ऑप्शन इज हेपेटाइटिस ए, बीटा ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, चार्ली ऑप्शन हेपेटाइटिस सी, डेल्टा ऑप्शन हेपेटाइटिस डी एंड द एप्सिलॉन ऑप्शन इज हेपेटाइटिस ई. सो द करेक्ट आंसर इज एप्सिलॉन, मतलब कि ई, हेपेटाइटिस ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जो पिग्स होती हैं दे आर रेजर्वायर्स, मतलब कि इनके अंदर मौजूद होता है द वायरस ऑफ हेपेटाइटिस ई. एंड द लास्ट वन, MCQ number 14. Which one of the following is false about AIDS? Alpha option HIV, beta option is acquired immunodeficiency syndrome, Charlie option is T lymphocytes, and delta option not correct.